Dear students, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ओके, सो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिज्म। ओके, व्हाट यू मीन बाय प्रिज्म? प्रिज्म, it is a wedge shaped, okay, wedge shaped transparent refracting medium. Okay, it's a wedge shaped transparent refracting medium with, okay, any two sides inclined to each other at a particular angle. All right, so this is what we can define about a prism. All right, now अब मैं आपको एक इसका पिक्चोरियल ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये देखिए, दिस इज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये देखिए, फाइन। नाउ ये इसका एक एड्ज हो गया जो हमें आगे से दिखते नहीं है, और ये ऐसे बन गया। ऑलराइट, लेट अस नेम दिस एज ए बी सी एंड दिस एज डी ई एफ। ऑलराइट, अब आप देखिए, लेट अस कंसिडर ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। नाउ इट विल फेस ए रिफ्रैक्शन and it will come out. Okay, it will come out in this way. Fine, अब आप देखना इस रिफ्रैक्शन को कंसिडर करते हुए। ऑलराइट, अब इधर जो सरफेसेस है, कितनी सरफेसेस है आप देखिए। अगर हम इधर सरफेसेस की बात करें, हाउ मेनी सरफेसेस हैं, देखो आप, एक तो हो गया ए बी सी, फाइन, और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगुलर सरफेसेस है। एग्री कर रहा है? ये दोनों ट्रायंगुलर सरफेसेस है। उसके बाद मेरे पास जो सरफेसेस है, दैट इज ए डी एफ सी, एक ये सरफेस हो गया। दूसरा बी ई एफ सी, तीसरा ए बी ई डी। अब ये देखिए, इस सरफेस में लाइट आकर के स्ट्राइक किए थे, है ना। आप देखिए, ए सी, सॉरी, ए डी एफ सी, इसमें लाइट आके स्ट्राइक किया था, फाइन। और ये जो सरफेस है, दैट इज बी ई एफ सी, ये जो सरफेस है, इस पे से लाइट बाहर निकले थे। ओके, सो ये दोनों जो साइड्स या ये दोनों जो फेस है, हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेस बोलते हैं। ओके, नाउ आपका ए बी ई डी फेस जो है, दिस वन, this particular phase is known as
the base of the prism. Base of the prism बोलते हैं उसको, base of the prism बोलते हैं. Fine. Now ये जो edge है देखिए, CF नाम का जो edge है, फाइन, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. समझ में आया? नाउ अब ये ट्रायंगुलर फेस देखिए, कौन सा? ABC. ABC. Now this particular angle, okay, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म. Let us now discuss about the deviation produced by a prism. Deviation produced by a prism. Deviation produced by a prism. Okay, so for that we need to consider two-dimensional figure of deviation through a triangular prism. So please consider this as the principal section of the prism. I think मैंने last जो discussion है उसमें बताना भूल गया था. Refracting edges, ये दोनों refracting edge थे, है ना? This was the base and this particular portion, this is known as the principal section. This is known as the principal section. Okay, principal section of the prism. ठीक है. So ABC जो है, that is the principal section of the prism. अब आप देखिए, let this be an incident ray. Okay, इंसिडेंट रे हो गया. नाउ ये इधर से ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया और ये फाइनली इधर से एमर्ज किया. सो दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, एंड हियर दिस इज द emerging ray और emergent ray बोलते हैं. emergent ray. Alright, अब आप देखिए, if I consider this as the normal, normal ऐसे जाएंगे and I can have one normal here as well. ऐसा हो गया. Fine. Now ये देखिए, I'm going to take this as angle of incidence I and here this as angle of refraction R. Now let this angle be R dash. Okay, and this angle is going to be I dash. Okay, now let me name this ray as PQ, incident ray as PQ, and the refracted ray as QR, and the emergent ray as RS. Now let me see, if this prism was not there, this ray should have followed this path, isn't it? It should have went like this. Now finally the ray is coming like this. So देखिए, ये जो angle है, this is the actual angle through which the ray got deviated. तो हम इसको बोलेंगे angle of deviation delta. क्या बोलेंगे? Angle of deviation. Angle of deviation बोलेंगे, उसको हमने delta angle से represent किया. Okay, now let this point be
capital M, and let me take this as capital N, isn't it? So we are now discussing about what? The deviation produced. Okay, what is angle of deviation? Delta. So we are going to get the expression for delta here in this topic. Okay, now first of all, consider the quadrilateral ANRA. Sorry, not ANRA. We need to consider the quadrilateral AQNR. Quadrilateral AQNR. Okay, so अब देखिए, here this is 90 degree for sure. Fine. Now देखिए, now this is also 90 degree. Fine. So this is A. Here this is Q. This is N, and here this is R. All right. Let this angle be capital A, isn't it? Let this be capital A. Now देखिए, angle A plus angle Q plus angle N plus angle R, this must be equal to 360 degree. Here this is angle A plus angle Q is 90. Angle N के बारे में हमें नहीं पता कितना है, again plus angle R कितना है, 90 है, equal to 360 हो जाएगा. इसमें से आप देखिए, एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा. Let this be question number 1. All right. Now what you need to do is you need to consider triangle QNR. Triangle QNR. Okay. This is a triangle QNR. This is Q, this is N, and here this is R. This was small letter R, this was R dash, and you may take this as theta angle. Okay, so here this we are going to mention this as angle N only. That's it. So from this one, from triangle QNR, देखिए, small letter R plus R dash plus angle N, angle N equal to क्या होना चाहिए, 180 degree होना चाहिए. Alright, now let this be equation number 2. Now what you need to do is just compare equation 1 and 2. Equation 1 and 2 को जब आप compare करेंगे, it's very clear, right hand side दोनों same है. That means you can equate the left hand side, that is angle A plus angle N equals angle N plus R plus R dash. N से N कट जाएंगे. Alright, इसमें से क्या conclusion निकला, R plus R dash equal to angle A. ये angle of prism हो गया. Let this be equation number 3. Okay. Now you consider triangle QMR. QMR. Okay. I can create that for you. So let this be QMR. Q, M and R. ये जो एंगल है, आप देखिए, ये टोटल एंगल कितना है,
ये टोटल एंगल आई है, इधर तक आर, तो क्या हो जाएंगे आई माइनस आर होगा। ये टोटल एंगल आई डैश है, ये आर डैश होगा, दिस इज आर डैश, तो ये क्या होंगे आई डैश माइनस आर डैश। ओके, सो मैं वो एंगल इधर मार्क करूंगा। सो ये हो जाएंगे आई माइनस आर, और ये क्या होगा आई डैश माइनस आर डैश होगा। और ये जो एक्सटेंशन, ये क्या था एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। सो यू नो दैट इस ट्राइंगल में से, दैट इज फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एम आर, we can write I minus R plus I dash minus R dash, that is equal to क्या होगा डेल्टा होगा। अब आप देखिए I plus I dash minus of R plus R dash equal to डेल्टा हो गया। ओके, नाउ ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इसका क्या मीन, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए होता है, isn't it? Now we'll replace R with R dash, sorry R plus R dash with A, which will give the expression as I plus I dash minus of capital A, that is angle of prism, equal to angle of deviation delta. That means I plus I dash equal to capital A plus delta, which means angle of incidence plus angle of emergence okay, equal to angle of prism plus angle of deviation, Is that clear? Now let us discuss which all are the factors on which angle of deviation depends. Okay, factors on which angle of deviation, that is delta, depends. So the factors are, first one, angle of incidence, okay, that is I. The second factor is material of the prism, okay, which will determine refractive index of mu 2 with respect to 1, where this was having a absolute refractive index of mu 2 and the surrounding medium was having a refractive index of absolute refractive index of mu 1. Third one is the wavelength lambda of the light used, okay, and the fourth one is the angle of prism, What is the angle of prism? जो आपके दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं इसके बीच का एंगल, इधर हमने कैपिटल ए लिया था। सो ये आपके दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, याद है ना, रिफ्रैक्टिंग फेस नंबर 1, दिस इज रिफ्रैक्टिंग फेस नंबर 2। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ prism बोलते हैं। सो दिस आर द फैक्टर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, material of the medium, wavelength of the light used, and fourth one is angle of prism. So these factors are going to determine the value of delta.
our next topic is variation of angle of deviation. Variation of angle of deviation. Okay, with respect to angle of incidence. Angle of incidence. In short, variation of d versus I. So for here we have got a choice of a single prism, okay, and a single wavelength of light. Okay, I will tell you why I am mentioning this point, because लास्ट डिस्कशन हमने ये किया था एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा किस चीज पे डिपेंड करते थे, एक तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू पे डिपेंड करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करते थे, लैम्डा में डिपेंड करता है यानी कि वेवलेंथ एंड ए। सो जब आपके पास दूसरा कोई प्रिज्म का चॉइस नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी कांस्टेंट, और you have got only one option of light also, so lambda is also going to be what, constant, यानी कि वेरिएशन सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही डिपेंड रहेंगे, एंड देयर वाज आवर टॉपिक आल्सो द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट, उसके लिए आप देखिए हमने ये पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस equal to angle of prism A plus angle of deviation delta। एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए, let this be 20 degree and let this be 28 degree, है ना, फाइन, ये तो कांस्टेंट है, सो डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 48 माइनस ए होंगे, isn't it? फाइन। अब आप मुझे एक बात बताइए, if I equal to 28 and I dash equal to 20, तब भी डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा का वैल्यू क्या रहेंगे, इट इज गोइंग टू बी 48 माइनस ए, मींस ये दोनों सेम है, राइट। सो इस कॉम्बिनेशन एज वेल एज इस कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू इट इज द सेम। Okay, considering this situation and based on experimental observation, we can have the variation of angle of deviation with respect to angle of incidence as this. Here this is delta and here this is angle of incidence. The variation is going to be like this. Okay, I will tell you, ये देखिए अब मैं आपको ऊपर जो कंडीशन I एंड I डैश का सिचुएशन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये देखिए, so let this be value of I, okay, now here this is I dash, ठीक है। अब देखिए the angle of deviation क्या आया, से डेल्टा A आया, अब आप इसको चेंज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I को I डैश पुट कर लो, I का वैल्यू इक्वल I का वैल्यू और I डैश का वैल्यू आप इंटरचेंज कर लीजिए, तब भी एंगल ऑफ डिविएशन क्या होने वाला है, डेल्टा सफिक्स A होने वाला है। सो दिस ग्राफ, I told you this graph was made from experimental observation. Now this graph says that
the value of dou will decrease with respect to I, okay, till a particular value, till a particular value. ओके, नाउ डो का वैल्यू डिक्रीज होते आया और मिनिमम वैल्यू आया कितना, से डो मिनिमम, ये हो गया डो मिनिमम, दिस इज दैट वैल्यू डो मिनिमम। ओके, इसको डो एम से भी रिप्रेजेंट किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में आई इक्वल टू आई डैश होंगे। ओके, आई इक्वल टू आई डैश होगा कहाँ पे, जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा। So once angle of deviation is minimum, angle of incidence is equal to angle of emergence होंगे। Now इसके बाद डो का वैल्यू क्या होंगे, इंक्रीज होंगे with respect to angle of incidence। समझ में आया? Fine. So my concluding statement is that we were discussing about what, the variation of angle of deviation with respect to angle of incidence। So angle of deviation with respect to angle of incidence कैसे होगा, the value of dou will decrease with respect to I till dou equal to dou minimum। Okay, now at dou equal to dou minimum यानी कि angle of minimum deviation में angle of incidence is equal to angle of emergence होगा, and after dou का value will increase with respect to angle of incidence। Our next topic is relationship between refractive index, refractive index and angle of minimum deviation, that is mu versus rho minimum relationship, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, we already had a discussion when dou equal to dou minimum, angle of incidence is equal to क्या होगा, angle of emergence होगा। okay, now when I is equal to I dash, R equal to क्या होगा, R dash होगा। when I equal to I dash, when R will be equal to R dash, isn't it? तो आप देखिए, in the very first topic I told you I plus I dash, this was equal to what, A plus डेल्टा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें से I इक्वल टू I डैश है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स I, दैट इक्वल टू A प्लस डेल्टा होगा। इसमें से I के वैल्यू क्या आएंगे, I इक्वल टू A प्लस डेल्टा बाय 2। सो ये जो स्पेशल कंडीशन में ये डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। ओके, नाउ we know that capital A was equal to R plus R dash. So at angle of minimum deviation, and angle of minimum deviation वाला जो situation है उस पे R was equal to R dash है, so 2R लिख दिया। इसमें से R का वैल्यू क्या हो जाएंगे, R का वैल्यू हो जाएगा A by 2। ओके, इधर आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो एंड यू मे कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आप इधर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin I अपॉन sin R इक्वल टू, इधर आपका जो प्रिज्म है ना,
ये जो रिफ्रैक्शन है, इधर आप इसको ग्लास अज्यूम करिए, you may consider this as glass and you may consider this as air. So इधर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू लिख रहा हूँ अपॉन एयर, यानी कि रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इट एज म्यू ओनली. सो हियर दिस इज गोइंग टू बी म्यू. ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. व्हाट वाज दैट, ए प्लस डो मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ आर का वैल्यू कितना था, a by 2, that's equal to mu. So here comes the relationship between what, refractive index mu and angle of minimum deviation dou mu. Our next topic is deviation through a small angled prism. Through a small angled prism. So अब देखिए, let angle of incidence I be a very small angle, be a very small angle. ठीक है, then if I is small, then I dash also will be small angle. साथ साथ R and R dash का combination में क्या होगा, it will be a very small angle. Okay, now आप स्नेल्स लॉ पे आइए. स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू होगा फेज 1 पे, है ना, बिकॉज दिस इज एयर, दिस इज ग्लास. ठीक है, ये लाइट इधर से इधर गया और ऐसे. ठीक है, आप अपना नॉर्मल अज्यूम करिए इधर, लेट दिस बी द नॉर्मल. ठीक है, तो ये आई हुआ, ये आर हुआ, ये हो गया फेज 1 पे. ओके, एट सरफेस 1 यू कैन से, एट सरफेस 1. ठीक है, अब आप सरफेस 2 पे आइए. दिस इज सरफेस 2. सो लाइट ऐसे आया, ऑलराइट, ऐसे जा. Let us create a normal here. Now ये क्या था, this was R dash and here this was I dash. इधर आप देखिए, इधर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, साइन ऑफ I dash अपॉन साइन ऑफ R dash इक्वल टू क्या होगा, म्यू होगा. Okay, so this is for surface 2. This was for surface 1 and here this was for surface 2. Okay, now we need to apply that small angle condition here. Okay, angle I comma angle I dash comma angle R and angle R dash, they are very very small angles, isn't it, very small angle. तो क्या हो जाएंगे, I by R क्या होगा, इक्वल टू म्यू होगा, isn't it. इसमें से I का वाली क्या होगा, I इक्वल्स म्यू टाइम्स R होंगे. ऑलराइट, फेज 2 के लिए I dash अपॉन R dash equal to mu हो जाएंगे. From here we will get the expression for I dash as mu times R dash, isn't it. We already had the relationship as I plus I dash equals angle of deviation dou plus angle of prism capital A.
इसमें ये देखिए ए आई का वैल्यू इधर पुट करना होगा आपको और ए आई डैश का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना होगा। हियर विल गिव द वैल्यू एज म्यू टाइम्स आर, ये आई को रिप्लेस किया है, एंड म्यू टाइम्स आर डैश, ये आई डैश को रिप्लेस किया हुआ है, इक्वल्स डेल्टा प्लस ए हो जाएंगे। इधर दोनों में म्यू कॉमन है, सो म्यू टाइम्स आर प्लस आर डैश इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, नाउ वी ऑलरेडी नो दैट आर प्लस आर डैश क्या होता है, एंग्लो प्रिज्म होता है। सो ये क्या होगा, म्यू टाइम्स कैपिटल ए इक्वल्स डेल्टा प्लस ए होगा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा प्लस ए। अब आप ए को लेफ्ट की तरफ ले आइए, सो क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए कॉमन हो गया, कैपिटल ए टाइम्स म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा हो जाएंगे। So for a small angle prism, what is the relationship between mu, comma, dou and a? I repeat, for a small angle prism, small angle prism. For a small angle prism, the relationship is going to be angle of deviation delta equals capital A times mu minus 1. Okay, I hope you got